यार मिसोजिनी का एक आइडिया था फ्रॉम द ओरिजिनल, बट हियर द प्रेजेंटेशन गेट्स वर्स. Hi everyone, welcome to First Cut Reviews. Today I'm going to be reviewing Kabir Singh. Okay, let's start off with a small confession that I want to make that about 3 हफ्ते पहले ही मैंने अर्जुन रेड्डी देखी है. And Kabir Singh is literally a frame to frame copy of the original. Arjun Reddy as a film was quite engrossing in parts, despite the entire logic and the script being extremely dated. The entire portrayal of girls in that film was extremely pathetic. And the only thing I was wishing out of Kabir Singh that there'll be some improvement in those areas. But improvement to chodo, probably it's the shift of the language or the culture or the extremely poor edit. Here those scenes are even more frustrating than they were in the original. Here the logic of treating women remains the same, but yahan par you will be angry. You just cannot buy what is happening on the screen. Arjun Reddy mein na ek raw si feel thi which kept it extremely realistic in parts. Pata nahi Kabir Singh mein that a sense just gets lost. Matlab the good parts of Arjun Reddy are also not captured well enough in Kabir Singh. But theek hai, I won't really talk about Kabir Singh keeping Arjun Reddy in mind. वो एक film थी, let's leave it. Let's talk of Kabir Singh independently. Script wise the film is pretty घिसा पिटा. मतलब हमने ये जो बेसिक स्टोरी है ना, ये जो प्रेमिस है एटलीस्ट 1000 बार पहले देखा हुआ है, स्पेशली इन द हिंदी सिनेमा. इट्स जस्ट दैट हाँ उन फिल्म्स में इतना हार्डकोर अल्कोहलिक ड्रग एडिक्ट वगैरह नहीं दिखाते थे. दैट्स द ओनली काइंड ऑफ स्टेप दैट दिस फिल्म टेक्स, एंड प्रोबब्ली द स्मॉल स्टेप दैट दिस फिल्म टेक्स इज द ओनली एनग्रॉसिंग पार्ट ऑफ द फिल्म एज वेल, बिकॉज इस फिल्म का बाकी का माइंडसेट तो पता नहीं कहीं 80s 90s में ही फंसा हुआ है. मे बी इट्स इवन वर्स देन दैट. मतलब लड़की के मोलेस्टेशन करना जस्ट बिकॉज थिंग्स डिड नॉट गो द वे द मेन वांटेड, इसलिए उस लड़की को थप्पड़ तक मार देना. जस्ट आइडेंटिफाइंग अ गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड टेलिंग ये तो मेरी बंदी है, कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसको छुएगा तक नहीं. स्टार्ट ओनिंग हर on your own self ego and stuff. The thing is, probably people like this actually exist in today's world also, but then showing that as something cool isn't cool. मेरे लिए इस मूवी के जितने इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस थे वो भी काइंड ऑफ बोरिंग हो जाते हैं, बिकॉज हाँ मैंने अर्जुन रेड्डी देखी हुई थी. मतलब लिटरली संदीप रेड्डी वांगा थॉट दैट yes he minted money out of the original, so let's just create a ditto same version of that in Hindi, probably just change the locations and the language in parts, and बस फिर से पैसे कमा लो उस चीज से. मैं जो ये ड्रग एडिक्ट एंड अल्कोहलिक वाला पार्ट है ये कह रहा था कि काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है एटलीस्ट इन द ओरिजिनल. यहाँ पर भी इट इज पार्शली इंटरेस्टिंग, और यहाँ पर तो इतना अच्छा म्यूजिक था यार इस मूवी के पास. अपने गाने यूज करके दे कुड हैव क्रिएटेड सच अ ब्यूटीफुल इफेक्ट. ब्लेम इट ऑन द टेक्निकलिटीज ऑफ द फिल्म कि इन्होंने जो वीडियो एडिटिंग एंड साउंड एडिटिंग किया ना वो इतनी मेस्ड अप है. मतलब लिटरली कहीं पर कोई शॉट चल रहा होगा, सडनली वो शॉट कहीं पर भी कट होके कहीं पर भी चला जाएगा. सिमिलरली फॉर द म्यूजिक, मतलब बेख्याली चल रहा होगा एंड दैट ब्यूटीफुल लाइन इज कमिंग एंड सडनली कहीं पर भी वो गाना कट हो जाएगा. मैं फाइनली तो सीन में इंटरेस्ट ले रहा था यार, तुमने सीन ही कट कर दिया सडनली आउट ऑफ नोवेयर. जब स्टोरी इतनी वीक हो मूवी की तो यू टेंड टू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म, बट यहाँ पर तो I don't know if I can appreciate anything about these characters. Kabir Singh is a pathetic man. He's self-destructive, angry, etc. etc. वो ट्रेलर में भी दिखाया था उन लोगों ने. पर ठीक है, लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं who really have this extremely bloated ego. We do not have a very heavy educated population in our country. People do not have that much knowledge कि हाँ लड़कियों को भी equal amount of rights treatment मिलनी चाहिए like men. So जब वो लोग जाके ये मूवी देखेंगे और देखेंगे कि शाहिद कपूर is literally just doing whatever he wants with the girls, then the message does not come across in a good way. Not at all. Kabir Singh का character इतना pathetically written है कि you don't really start hating him. You just don't want to watch him. You just cannot buy that character. It starts getting stupid beyond a point of time. But again, the character that you'll hate the most is Preeti's character played by Kiara Advani. The portrayal of that character as extremely timid, डिपेंडेंट, जो लिटरली यही मानती है कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ तेरे बिना कबीर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, विच शी वेरी सैडली इवन एक्सेप्ट्स इन अ सीन इन द फिल्म. यू आर लाइक नो गर्ल, you have an identity. Please own your own identity. Matlab, I literally wanted to go up and slap that girl for being so pathetically dependent on that man. Now, this is something that might be frustrating. This is something that does not need to be shown in today's cinema. But many people might just oversee it and they'll be like, हाँ ठीक है यार, दिखा रहे हैं films में, दिखा रहे हैं, दिखाने दो. But ठीक है, if you kind of try to give this misogyny a pass, there are a few comic moments which really hold well in the film, especially the interactions between these friends of Kabir Singh and the way probably Kabir Singh sometimes delivers his dialogues as well. Chalo, talking about the acting a little bit, Shahid Kapoor pulls off the role good enough. Matlab, he's not as good as Vijay in the original, but you can imagine that Shahid actually had something to see and he just had to like replicate what was going on the screen. But yeah,
मुझे इतना लगता है इसको नॉमिनेशन मिल जाएगी. कियारा अडवाणी literally doesn't have much to do in the film. I just told what kind of a character Preeti is. उसका तो मुंह भी बड़ी मुश्किल कभी खुलता है मूवी में. But ठीक है, मतलब she's kind of passable with her expressions. Anyway, कल हॉल पूरा भरा हुआ था. People were laughing their asses out. People really loved the film, I feel. तो चल जाएगी ये मूवी. But I just pray about one thing, ये मूवी चल भी जाए उसके बाद भी the kind of cool behavior that this film tries to put across, that I hope does not play around with the minds of the people. Our hero is not a hero, he's a villain. Please understand that. Anyway, I'm going with a generous 2 out of 5 for Kabir Singh. The characters are so pathetic that not even once in the film you will feel that they are in love. They are attached. No.